Hello everyone, welcome back to my channel. I have recently changed the name of my channel from Learn Law to IFA, and it was just to make a new change. And I hope you all are doing really well. So today we are going to discuss few important questions regarding the interview of contract life cycle management. ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के इंटरव्यूज़ के टाइम पे एज अ फ्रेशर we are asked in the interviews. So we'll just discuss the most important ones currently in this video. Moving on to the first topic, which is effective date. An effective date is the date on which legal rights or obligations become binding between two or more parties. Effective dates arise in a broad range of circumstances. So basically effective dates क्या होते हैं कि जो पार्टीज़ रहती है वो एक दूसरे के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो दे डू द साइनिंग एंड आफ्टर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट इट बिकम्स बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज़. बट कई सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये रहता है कि एक जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो उसमें टॉप पार्ट जो प्रीएम्बल रहता है कॉन्ट्रैक्ट का उसमें स्पेसिफिकली मेंशन रहता है. सो दे मेंशन दैट this part of the preamble which states the effective date, we'll take that as effective date and not the signature ones. But some clients ऐसे रहते हैं, उनको ऐसा रहता है कि signature block में जो हमारा date दिया हुआ है उसको हम effective date लेंगे. So that is why it is mentioned the circumstances of the effective date are a broad in range. Moving on to our next slide, which is termination for convenience, which is also known as termination without cause, is called a termination for convenience. This clause, as the party has an option of exiting the contract after expiration of predetermined notice period without providing any reason. So basically, in short, termination for convenience का मतलब ये है कि termination for convenience जो है वो clause parties को right देती है कि वो अपने contract को कभी भी end कर सकते हैं without giving any reason. Moving on to our next slide, which is termination for cause. A contract usually contains one or more scenarios under which a party may terminate the agreement due to actions, inaction, or a breach of contract from the counterparty. So what happens in termination for cause is when two parties come into contract, they make a clause. उस clause में ये mention रहता है कि अगर आप कोई action करते हैं जो गलत है या whatever action or inaction, or if both of the parties, either party does any breach, so the contract may end, and there are different scenarios for such termination of contract. That is why there is a clause which says termination for cause. That means that there should be a cause for terminating it. Moving on to the next topic, which is governing law. A clause used in legal agreements where you can declare which rules and laws will govern the agreement if any legal issue arises. So this is the most easiest and simplest topic, governing law. क्या होता है जब दो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो उसमें एक क्लॉज डलवाते हैं जो गवर्निंग लॉ क्लॉज रहता है. उसमें ये रहता है कि अगर हम दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कौन से स्टेट के लॉज अप्लाई होंगे जो उस लीगल इशू को सॉल्व करेंगे. सो मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी. A limitation of liability clause in a contract limits the amount of money or damages that one party can recover from another party for breaches or performance of failure. Let me explain it in a simpler way. Limitation of liability में क्या होता है कि हम liability पे एक limit लगा देते हैं. जैसे कि इस clause में एक part fix कर दिया जाता है कि इससे ज़्यादा damages पार्टीज़ एक दूसरे से क्लेम नहीं कर सकती है. अगर कोई ब्रीच होता है या कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो दोनों पार्टीज़ इससे ज़्यादा लायबल नहीं होगी. सो देयर इज़ अ लिमिट ऑफ लायबिलिटी ऑन बोथ द पार्टीज़ कि जो भी डैमेजेस है या मनी है वो एक लिमिट तक ही क्लेम कर सकते हैं अगर ब्रीच होता है या परफॉर्मेंस ऑफ फेलियर होता है. Okay, so that's all for today. To know more, stay tuned and let me know if you liked my video in the comments below. Bye bye.